This week, I feel like Mandala murdering the son of Sardar, as there is a war too going on in my head about what I'm more indifferent about. Param Sundari's new song, Dhadak 2's release, or Urvashi Rotela going through aviation troubles. Come, let's talk about all of this and more. My name is Andresh Thakkar, joined by... Whoa, Snehal Areja. Bro, yes. And a buzz moment. and now we clap for Antariksh. Yes. Yes. Just to show you the seriousness, he's actually written the whole entire shit thing down. I think I take the line down. Dude. Wow, dude. I prepare and shit. Crazy. I prepare for all of 10 minutes. And that's my writing. So that's why I don't get that much writing. Although I'm writing something very exciting. I'm talking I was about about that. to say, let's hope your employer is not watching this. Oh no, that's fine. They're very happy with me right now. Yeah, Having a good time. Chodo. Welcome. Again, more to talk about there also. Welcome to another episode of Pop Conversation. Today we're going to talk about a lot of fun things. Yes. Before we get to Son of Sardar, speaking of movie theaters. Oh, bro. Bro, Fantastic Four. Wait, Fantastic Four is also a fantastical movie going experience. Okay, it's not often. It's not often when this happens. Okay, where sometimes you will go to the theater and there'll be a friend at the theater with you. Okay, now sometimes it will happen that you'll go to a movie theater. Okay, not often. How many people go for movies alone anyway? Okay, it's a very weird person. Firstly, who goes for a movie alone? Okay, If you're a podcaster, sorry. If you're a podcaster or your work revolves around watching movies, then people have to go watch alone. I mean, it's a very Not lonely everybody person. is married. It's a very sad, Yeah, exactly. very sad person who has to go for a movie alone. But that's fine. Yeah. And then sometimes it happens that in the same movie, in the same theater, sometimes there'll be another sad person, some sad friend of yours that you'll run into, like, dude, tu bhi akele yahan pe kahan baitha hai? Okay, that would be a regular day. That's fine. But sometimes it happens, okay, that one of you grabs the seat. Okay, you grab the seat and you're sitting there. Okay, and then another person comes, grabs the seat. You guys look at each other. Turns out you guys co-host a podcast together. How is this possible? Can I tell my version of this now? So let's just break it down. Snehal and Abbas, by complete happenstance, the universe colliding to make this happen. Weird, dude. You know how meet cutes happen in movies. Yeah, actually. आप यहाँ पे भी if we were to get married, this would be such a good story to tell. Dude, really, man. This is how you guys. This is epic. This is the ultimate story you tell your grandchildren. This is it, dude. Amazing. Snehal and Abbas went for Fantastic Four. Turned out Don't by put it no. that way. Snehal and Abbas didn't go. Snehal went and Snehal Abbas went and went. Abbas went. Turned out they were sitting right next to each other in the same theater. That means Snehal tried to, or whoever booked first tried to book that seat. The other person has taken. I booked first because when I booked, the two seats next to me were empty. Okay. So he was like, "मेरे को ही परेशान नहीं करेगा." I went for before that I went for a comedy show at 7 p.m. in Bandra. Okay. और उसके बाद मैंने सोचा कि फैंटास्टिक फोर देखनी क्या करूँ कल सुबह जाऊँ कि आज रात because it was an 11 p.m. 11:45. something like that. Yeah. I was like whatever, it's a Saturday, देख लेते हैं, दूसरे दिन Sunday है. So I checked book my show. The show was in Juhu. और मैंने सोचा कि the hall was about 55-60% full, and I looked for a seat. I'll take the aisle seat when I'm going alone. Kind of like if I have to walk out or whatever, I can easily go. और मैंने बुक किया 3 सीट अगली खाली थी, उसके बाद में भरे हुए थे. मैंने कहा ठीक है मैं चिल करूँगा थोड़ा आराम से. By the time I get there, I see that a lot of more tickets have sold, whatever. And I get comfortable in my seats. I'm checking out the 3D glasses, everything. Okay. The lights dim. Okay. Okay. National anthem शुरू हो गया. मैं खड़ा हो गया. And then suddenly spotlight comes on. 3-4 boys walk in, and I'm like, oh shit, they're coming here. Oh, Okay, I guess the seats आगे next 3 to me. लौंडे साले. Whatever. So आगे 3 चूतिया. नेशनल एंथम शुरू हो गया. अंधेरा है अभी. खत्म हो गया था. हाँ, मैं नेशनल एंथम के बाद घुसा था. वो लड़के जो थे. Is that your tactic? नहीं because when I walked in I was like चलो शुक्र है बस अभी क्रेडिट रोल होना स्टार्ट हुआ है, मूवी मिस नहीं हुई है. So they sit down next to me. मूवी शुरू हो गया. मैं मूवी देख रहा हूँ और एकदम से वो आवाज आती है, अबे एबी. Like right next to you. Yeah. Then first I thought someone from behind. I'm like पीछे से बोल रहे कौन है. फिर 1 सेकंड के लिए लगा मेरे को कि शायद कोई पॉडकास्ट से मुझे पहचान गया. मैं बोला मैं जो एबी कौन बुलाता है.
मेरे को देख के पता क्या कह रहा है, ओ हाय व्हाट्सअप ब्रो, एंड आई एम लाइक कभी जीवन में मेरे को नहीं बोला इसने ओ हाय व्हाट्सअप ब्रो, he didn't recognize Bro, it. it was dark. रोशनी सिर्फ स्क्रीन की आ रही. फिर मैंने थोड़ा देखा, अरे घुंघराले बाल, दाढ़ी, एबी, अबे ये तो स्नेक. अरे ये तो इंडिया के क्रिकेट जर्सी में. और फिर 2 सेकंड तक मैं मैं सपना देख रहा हूँ कि जिस इंसान के साथ मैं पॉडकास्ट होस्ट करता हूँ, ये करता हूँ, बिना किसी इंटेंशन के वो मेरे बाजू में आके बैठ बगल गया. वाली सीट ब्रो पहली बात तो यू नो इवन आवर लिसनर्स माई सेल्फ इंक्लूडेड हम चूतिए तो नहीं. वी नो यू बोथ वर सीक्रेटली ट्राइंग टू डू सम कुची कू. एंड पता है जब इसने फिर सेल्फी लेके ग्रुप पे डाला एंड यू वर आल्सो लाइक कि ओ नाइस मैं तो अभी इससे आया हूँ ये वो, आई रियलाइज्ड कि ही उसको समझ में नहीं आया. तुम लोग चले गए मेरे को बिना बताए प्लान बना भी लिया, पहुंचे गए फैंटास्टिक फोर के लिए भाई. देन आई रोट ऑन द ग्रुप कि भाई हम ऐसे द डायनामिक डुओ वाचिंग फैंटास्टिक फोर. Bro, it was the day our previous episode dropped. I was on the live chat with him 2 hours before. That's crazy. Exactly. Wouldn't it be insane while you're like, hey, I'm in this movie. Yeah, I'm also in this Abbas. Right, I'm in this seat number. Yeah, same here. 17DF. What? इंटरनल में बात भी कर रहे हैं, एपिसोड थोड़ा अच्छा कर रहा है. एपिसोड अच्छा कर रहा है. सयारा के कमेंट्स पढ़ रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं लोग. But he wasn't alone. He was with friends. Yeah. भाई फ्लैटमेट मेरा आकाश के साथ गया Oh, हुआ is था. it? And his sister went for Sayara. Same theater पर सिया. No, so she, भाई again funny, मैंने उसके लिए फैंटास्टिक 4 का टिकट बुक किया था. She walked in and then she's like मेरे को नहीं देखनी फैंटास्टिक 4, I have zero interest. I'm like but अब मैंने टिकट ले लिया है तेरा, तू बैठ ना. भाई सो 11:45 पे इसका शो था फैंटास्टिक 4 का. 11:35 पे ही डिफरेंट ऑडी में सयारा का शो था. भाई वो सयारा में जाके बैठ गई. पर तो टिकट वेस्ट क्यों आकाश आ गया. नहीं फैंटास्टिक 4 का टिकट वेस्ट, बट उसने सयारा पूरी देखी बैठ के फिर वहां पे. पर मतलब On the Fantastic Four ticket. She's like I'll watch Sayara again but I don't want to watch Fantastic oh Four. yeah, once you're in. Nobody asks. Yeah, Right, तो dude, she वो अंदर ही उसने देखा कि हॉल आधा खाली है. Yeah. कौन देख मतलब Yeah. हो गए 1.5-2 हफ्ते हो गए. Right. तो she just went there and sat. And then मैं कहती मुझे मैसेज करती जब इंटरवल आ जाएगा अब आपका तो मुझे मैसेज करना, मैं बाहर आ जाऊंगी. मैंने कहा great. I just तेरा इंटरवल तो अलग होगा ना. कह रही बट मुझे खाना तो आप ही खिलाओगे ना. ये बात के ऊपर मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया. क्विकली आई टेल एंड देन विल मूव ऑन टू द थिंग. आई हैड गॉन टू सी वन ऑफ द हैरी पॉटर्स, ओके, एंड आई वाज वाचिंग द फिल्म और मुझे लगा हैप्पी न्यू ईयर बोलने वाला है. मुझे लगा when Harry met Sejal बोल रहा है. तो 3 लड़के बैठे हुए थे, स्नेहिल नहीं था वो. तो है ना, फिल्म स्टार्ट हो गई whatever, and then another group of friends, 3 friends come, like 2 girls and 1 guy. They come in and they are checking their ticket and they're checking the seat, they're checking the ticket, checking the seats. फिर उन्होंने उनको ऐसे ये करके बोला कि excuse me, these are our seats. और ऑडी फुल है, this was like the first day or something. तो उन्होंने no, these are our seats. No, these are our seats. Can you please check the ticket? तो लड़के ने टिकट निकाला, चेक किया, बाजू वाले दोस्त को बोलते हैं अबे कल की टिकट. Yeah. This has happened. It's happened to us also. I've done this once. My brother's done this once. Exact same thing. We booked the next day ka मतलब ticket. किसी ने रोका नहीं, किसी ने डेट नहीं देखा, अंदर आ That गया. happens, dude. That happens. It's a legit. Wow. I'm sure, actually, Yeah. dude, I'm sure this happens to a lot of people. Please let us know if this happened to you also, where you or one of your friends or your family member booked Kalki ticket, but you ended up on the wrong day. Okay, so getting to the first thing we want to talk about, Son of Sadar. Sada 2. Son of Sada is 2. Dude, in my mind, it looked to be one of the worst movies of the year. Bro, very But honestly, from But you- surprise. Yeah. very honestly, one of the worst trailers. I agree. Dude, you're saying the movie is good See, I'll or tell better than the trailer. 110% it's better than the trailer. मतलब trailer देख के I'll tell you how I Impossible, watched. dude. That's a tough thing. I'll tell you. Yeah. So जब trailer release हुआ, so मुझे Son of Sardar 1 अच्छी नहीं लगी कुछ खास, जबकि धीरे Son of Sardar 1 का थोड़ा cult following Is बनता जा it? रहा है. Because, dude, yeah. Yeah, dude. मेरे को भी नहीं पता. Like a lot of, like, see, I agree. A lot of people are saying that the movie did not deserve a sequel. Yeah, bro. Which is fair because like कितने लोगों ने देखी है? It's not हेरा फेरी लेवल की हम उसका yeah. फिर हेरा फेरी की हम बात करें, ठीक है, बट ठीक है, सीक्वल आया, द ट्रेलर डिडंट लुक गुड एट ऑल, सो आई वाज
actually not gonna go and watch Son of Sardar 2. I was like, I'm not gonna spend money, go and watch Son of Sardar 2. By chance मुझे मेरे फ्रेंड के थ्रू स्पेशल स्क्रीनिंग के पासेस मिल गए, तो आई वाज लाइक अब अगर मुझे स्पेशली पैसा नहीं खर्चना पड़ रहा है, Friend of the show, Akash Bhatnagar. हाँ फ्रेंड ऑफ द शो आकाश Who भटनागर gave you obviously, passes? तो ही वाज लाइक आज मैं +1 ले जा सकता हूँ, तो मैंने कहा चलते हैं. तो मैं जस्ट टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट, आई वाज इन अ ऑडी फुल ऑफ थिएटर एंड फुल ऑफ क्रिटिक्स एंड रिव्यूअर्स एंड ऑल दीज पीपल, ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स ऑफ सॉर्ट्स, जिनको भी मतलब उन्होंने इनवाइट किया होगा. सो आई गो देयर विद जीरो एक्सपेक्टेशंस. I think everyone firstly went भाई there. एंड ऊपर से आई वेंट 5-10 minutes लेट ऑल्सो बिकॉज आई वॉज लाइक आई रियली डोंट केयर अबाउट द फिल्म. ट्रैफिक था तो आई एम नॉट गेटिंग स्ट्रेस्ड आउट एंड ऑल ऑफ दैट. आई वेंट, ठीक है भाई. आई सैड स्टार्ट लाइक देखा पूरा थिएटर भरा हुआ है, हम लोग बैठे हुए हैं एंड आई हियर गिगल्स. तो हम लाइक ओ पीपल आर गिगलिंग, ठीक है. फिर उसके बाद मैं बैठा हूँ, अब मैं बैठ के शो देख, मूवी चल रही है, 2-3 बहुत क्रिंज डायलॉग्स आते हैं कि इंग्लिश का कुछ प्रॉब्लम है. I've heard most of the movie is cringe, by the way. There's a very small part of the movie which actually lands. So, bhai, most of the film landed for the audio that I was sitting in. What are you for saying, sure. dude? I'll tell you again. I'm They'll not saying it's. Are they bad jokes done well? Is that what it is? It's so bad that it's good. No. They are silly jokes, but they land very well because everybody has performed very well. ठीक है, like jokes. I'll tell you why. So मैंने actually Bro, इस बंदे को सैयारा से इतनी प्रॉब्लम मुझे पता था. इसको मेट्रो इन दिनों मुझे पता था मेट्रो कि इन दिनों इसको बदतर लगी, बकवास लगी. He had so many Son of Sardar is the movie he defends. I knew it that this will This is come up. But bizarre. then I'll tell you Bizarre. there are reasons to Oh, it. I get it. Anyone who was also starring in Tarzan the Wonder Car can never do anything wrong in his eyes. नहीं, I'll tell you why. Because see, जब आप अभी हम धड़क 2 के बारे में बात करेंगे, जब आप ये सोच के जाते हो ना कि ये एक अच्छी पिक्चर है, इससे मुझे कुछ मिलने वाला है, हाँ. तो देन तुम उसको उस तरीके से एक्सपेक्ट करके जाते हो कि मुझे ये सब आई तो भाई एम एंड अजय एक्सपेक्ट टू देवगन गैदर. is a genius. But He I'll has tell figured you, out how to make people have zero expectations. So Bro, the the trailer was that's actually what the very secret bad. is to cut a bad trailer. It was a very bad trailer, and I'm don't get me wrong. I'm not saying it's like a comedy genius sort of a film. हेरा फेरी level, welcome level, ऐसा कुछ बना दिया है. नहीं है ऐसा कुछ. जो लोग अच्छा. Are you saying it's पैसा वसूल? He didn't pay any money. मतलब but true. it That's is true. पैसा वसूल. If you spend like 230-250 कौन rupees on a सी? ticket, No, bro. 300. क्या बात कर रहे हो? आज- अभी आज की टिकट्स इतने ही हैं, 200-230. तो 200 ऑफर चल रहा है ticket. कि आप 2 टिकट लो तो आपको 200 रुपए ऑफ मिल रहा है. धड़क 2 पे भी, सन ऑफ सरदार 2 पे भी. तो आई थिंक फॉर दिस मच अमाउंट, भाई देर आर सो मेनी व्हाट द फक मोमेंट्स जो लाफ्टर जनरेट करते हैं. Because it's so random. They are so random. That makes sense because it doesn't make sense. Yeah, because it does not make. That's what I'm saying. So इसके अंदर एक भाई. So it's not a good movie by any means. It's just because it's so bad, it's funny. so You know then. we should give context. You were saying you watch a lot of Punjabi comedy. हाँ. And this So is- again, yeah. मैं वही बोलना चाह रहा था कि one of the writers is जगदीप सिद्धू. ठीक है. He is उसने जट एंड जूलियट 3 लिखी है, किस्मत 2, ये कुछ पंजाबी फिल्म्स जो हैं वो उसने लिखी है. एंड दिस इज़ अ वेरी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री कॉमेडी जो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी. सो इफ समवन एंजॉयज दैट काइंड ऑफ कॉमेडी, ये आपको एक अच्छा लाफ्टर थ्रू आउट रखता है. मतलब इट्स मोर और लेस लाइक अच्छा ये यही चल रहा है पूरी पिक्चर में. ठीक है. nobody is Yeah. laughing out loud and Yeah. what a fucking gag and all of that. None of that. Yeah. But it's all कि अच्छा हाँ यही चल रहा है पिक्चर में. And I don't think the film promises anything more than that also. अब जैसे But dude, see, that's the problem, dude. In the sense, you can't call that a good movie or an I'm enjoyable time. भाई बट और इंजॉयबल टाइम क्या होता है? आप गए हो, आप एकदम ही लाइट हार्टेड एक कांस्टेंट 2 घंटा आप गिगल करके वापस आ गए. That's it. That's pretty. And again, there are many Fair enough.
क्रिंज जोक्स, जब जैसे Yeah. एक है कि रवि किशन वो का जो tits and कैरेक्टर ticks. है टिट्स एंड टिक्स वाला एक है, He says the cow has good I know, sheep you told me, yeah, sheep sheep. sheep sheep has sheep tits. has, जाओ sheep के टिट्स चेक करो, and they're like भाई sheep के भी How tits did they check not have करने to हैं? censor it? The word. Because Beep it's the word. actually ticks. He's actually trying to say. He's trying to say ticks, not ठीक है. तो but ऐसे कुछ बहुत ही जोक्स हैं. You know, by the way, वो चलेगा. I'll tell Superman you, kiss नहीं करना dude, चाहिए. by the way, I just found out today, quick tangent, Yeah. so sorry. Today I found out there is a bird with blue feet. And the name of the bird is boobies. Really? That's a bird. Oh wow. It's What called does the feet boobies. have to go? Huh? What does the feet have to I don't know, it's just a very beautiful, bizarre looking word. So I looked up what is this bird called. And I actually saw the bird on Reddit. And everyone said, hey, these are boobies, these are boobies. I'm like, what? These are what? What Reddit thread are you on? I was just like, this is damn interesting. He's like nice blue eyes boobies. That is That's my Reddit search, yes. and इसको blue boobies दिख गए वहाँ पे. But anyway, और he's like कि But I'm there's also a bird called tit. If That I'm makes not sense. wrong. Yeah, that's Yeah. wow, dude, you guys know an awful lot about things that are called tits but are not tits. And then there are humans called dicks. But anyway, so coming back to Son of Sardar, I'll tell you, starting में ऐसे कुछ cringe jokes हैं और ये एक tits वाला ही गैग है जो थोड़ा like कि मत करो is तो बेहतर रहेगा. But then there are so many what the fuck moments where अब जैसे एक उसके अंदर moment है where Ajay Devgan is giving a monologue on how dance is important in life. Yeah. Is that meant to be? No, funny? no, it's meant to be funny. It Because is Ajay like, Devgan is obviously delivering it. it's Ajay Devgan and उसके just like 15 मिनट बाद पहला तू तीजा तू गाना आ रहा है. So I think वो लिखा उस तरीके से गया where people मतलब आपको दिमाग नहीं भी लगाना पड़ेगा but then you'll still get it, but you'll still, you know, there's ऐसा वो चल. अब उसके अंदर एक सीक्वेंस है where he says कि Ajay Devgan जो है, he's pretending to be a colonel from like the Indian army, and this guy says, Ravi Kishan, he says कि पाजी बॉर्डर का कोई किस्सा सुना दो. तो वो बॉर्डर फिल्म नरेट करने लग जाता है कि मैंने उसको बोला कि मथुरा दास तो you know, and then there are like Bindu Dara saying, I've heard that part of the film is very funny. very funny, उसमें yeah. तो लोग लिटरली से laugh out loud थे, ठीक है. सो अब वो जब वो बॉर्डर का किस्सा सुना रहा है तो इधर विंदु दारा सिंह और मुकुल देव बैठे हैं एंड दे बोथ हैव कॉट ऑन टू हिम. दे आर लाइक कि ओ यार ये तो बॉर्डर फिल्म सुना रहा है, हमने तो किस्सा सुनाने बोला था. एंड देन मुकुल देव इज लाइक कि ओ पाजी तो सनी देओल का डायलॉग है, ठीक है. एंड देन दे कट टू Ajay Devgan's face morphed on Sunny Deol, and then he's and then ट्रेलर में भी था. हाँ, and ठीक है, and then what happens is अब उसको आगे का तो कुछ पता ही नहीं है तो वो बीच में वो सुनील शेट्टी की लाइन से बोलने लग जाता है. एंड देन मुकुल देव इज लाइक पाजी तो सुनील शेट्टी बन गया. Does he change his हाँ, delivery? ठीक है. नहीं वो उसी उसमें सुनील शेट्टी के डायलॉग्स बोल रहा है. एंड नाउ कट टू उन्होंने सुनील शेट्टी के ऊपर अजय देवगन का चेहरा ऑफ कर दिया है, ठीक है. एंड नाउ बोथ ऑफ देम हैव दिस लाइक पाजी सुनील शेट्टी, ओ नहीं पाजी सनी देओल, पाजी नहीं सुनील शेट्टी. एंड देन अचानक से वो जैकी श्रॉफ का एक डायलॉग बोल देता है एंड देन लाइक पाजी ये तो जैकी श्रॉफ भी बन गया. तो यू नो, सो ऐसे एक पूरा ऐसा गैग बना रखा है, ठीक है. एंड देन देयर इज दिस वन रनिंग गैग कि the other family in picture is a Pakistani family. मृणाल ठाकुर साहब. Mrunal Thakur's family. By the way, ठरक घर पे रख पहले. it's not about Tharak, dude. पहले She's घर पे looking रख के so आया. good. When he says it, it's about eternal beauty. Okay? It's about beauty, When we yes. say it, it's about Tarak. Yes, Yeah. because I'm not googling blue tits now on Reddit. Bluebies. Blue boobies. Blue boobies. Yes, sorry. Bluebies. Hey, she's looking very good. Deepak Dobriyal done a fabulous job. It was actually a very thin line, because he's playing someone who's transitioned. He's playing a trans woman, right? Yeah. So very thin He's line. playing a trans woman? Yeah. Oh, yeah. एंड में उन्होंने कैमियो दिया है. इफ Chunky you want me Pandey. to tell you the cameo? Chunky Pandey. Sure. No. Chunky Pandey the Chunky Pandey head. is in the film. अच्छा. Do you want me to give you the cameo? हाँ. I mean, you're giving I'm not everyone a watched cameo. it. You're not watching it, no? Yeah. So Spoiler end- alert. ठीक yeah, है. spoiler हाँ, alert. मतलब एंड में एक बहुत फनी, मतलब एज इन बट वाला कैमियो है. Can we guess? Yeah, Will can we be able to guess? guess? What's your guess? Yeah, very easy guess. Sunny Deol. No. Oh, मेरा- wait. अजय देवगन से काजोल. रिलेटेड सोचो ना. काजोल Ajay का Devgan से बेटा related, बेटी
अजय देवगन, ओ रोहित शेट्टी. रोहित शेट्टी. ठीक है. सो वो फाइनली एंड में मृणाल के पास आता है प्रपोज करने के लिए, एंड वो ऐसे प्रपोज करता है, जमीन पे केरोसिन डाल देता है और केरोसिन में विल यू मैरी मी लिखा हुआ और उसमें आग लगा देता है. तो वो जलता हुआ उसको दिख रहा है विल यू मैरी मी, और वो जलते 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 पीछे एक गाड़ी खड़ी होती है, वो गाड़ी उछल जाती है एंड देन रोहित शेट्टी कम्स आउट इन द बैल्कनी एंड इज लाइक, ए मेरी गाड़ी किसने उड़ाई. ठीक है. एंड देन अजय देवगन लुक्स अप एंड इज लाइक, अरे तू. एंड देन इज लाइक, अरे बॉस आप. एंड लाइक, तू यहाँ क्या कर रहा है? बस भाई गोलमाल 5 फिनिश कर रहा था. Why? How is this? There's no relation. There is like any sense. There is so much randomness in the film. That randomness is so funny. It's the randomness is very funny. Dude, this is all of this is reminding me like 2015 era just comedy circus. gags, Oh, yeah, sure. gags. So you basically have like a very light-hearted smile, giggle on your face throughout the film. Again, not promising it to be like a great film. It is not. But better than Metro in Dino and Sayyara. This is the for same sale. tone he had for Sayyara also. It's not great, but it's whatever. Yeah, but it's for whatever they are trying to serve, I didn't like Sure. they are trying to serve what they are serving. Son of Sardar. Sayyara for me did not deliver what actually it delivered, but I didn't understand कि भाई What is the Hype hype? तो of course didn't make sense and nobody is saying. और hype again बात सिर्फ hype की भी नहीं है, मतलब I thought it to be like a okay good film, that's it. Yeah. और Metro though I didn't like. We- That though I stand by it. Metro I didn't like. Yeah, Sayyara, it was, none of us said it was a great film. It was an okay film, but we understand. But yeah, the son hype. of if अगर तुम खाली बैठे हो and you're looking for some giggles, you can actually go and have a fun time at Son of Sardar too. Okay, I won't. But you can if you are so inclined. I think then you also watched Dhadak 2. Quickly, Dhadak 2. I've heard is firstly a better movie than Sayyara. I mean, that's not hard to believe. Yeah, it's not hard to believe. Also, different like target audiences in a way. Different. Yeah, different topic also. Different topic. This one is different treatment. This is like different intercaste marriage or something. So- where the family First against Dhadak it. was also about Spiritual Yeah, sequel yeah. of Dhadak, obviously. ठीक है, Dhadak was a remake of Sairat. Dhadak 2 भी एक film का remake है. I'm Oh, forgetting dude. the name. धड़क the मैंने देखी है. Malayalam film? ईशान खट्टर. Yeah. मैंने देखी है. देखी है ना आपने? हाँ. हाँ. Dude, it's not great. हाँ, Also, मतलब जानवी कपूर की पूरी गलती होती है इस पिक्चर में कि मेरे को आके यहीं पे आके मेरे को किस करो पार्टी में आके वो बंदे पकड़े जाते हैं. वो तो होना ही था. तो इसमें भी like they followed the beats, पार्टी में ही प्रॉब्लम होती है, etc. But the major difference between Dhadak and Dhadak 2 that I felt was कि धड़क में what was happening was कि there was a love story जिसके अंदर problems आ रही थी because of the cast. Right. इसके अंदर also they've tried to do that, but it feels like कि कास्ट एक है, लव एक है ऐसा. नहीं, इट फील्स लाइक कि दे वांटेड टू शो कि कास्ट का प्रॉब्लम आज भी एग्जिस्ट करता है, उसका बाय प्रोडक्ट ये भी है कि लव में प्रॉब्लम आ रहा है. Okay. आप समझ रहे हो? Yeah. Okay, got it. ठीक है. Fair enough. मतलब हाँ, मैं ये नहीं कह रहा point कि to take, yeah. गलत है सही है, मैं वो नहीं कह रहा, मैं टेक का डिफरेंस बता रहा हूँ. जैसे उसमें लव स्टोरी वाज एट द फॉरफ्रंट, इसके अंदर लव स्टोरी इज नॉट एट द फॉरफ्रंट, byproduct of the इज अ issue. बाय प्रोडक्ट ऑफ द इशू. Right. कि मतलब अब उनको वो पसंद आ गए हैं आपस में, तो वो क्यों प्रॉब्लम कर रहे हैं कास्ट की वजह से ये है. बट वो प्रॉब्लम अगर उनको प्यार नहीं होता तो भी उतना ही परसिस्ट करता. Right. ठीक है, वो वैसा सीन है कि अगर वो उसको डेट नहीं कर रही होती तो भी वो उसको आगे वाली सीट पे नहीं बैठने देते. वो उसको डेट नहीं कर रही होती तो भी वो उसको यही बोलते कि भाई तुझे तो फ्री की सीट मिली है या एटसेट्रा. Okay, fair enough. I've heard both the leads का act and everyone's acting is rather good. Everyone's acting is very good. Siddhant Chaturvedi has upped his game and how. Yeah, that's the he's thing. done a very, very good job, which I think his career needed. Yeah, sure. He's done a very good job, no doubt about it. Tripti has finally like gotten a role where she can. Since Animal. I swear, dude, I was so happy for Kirti कह रहा हूँ. For Kirti also you can be happy. also you can be Kirti happy, के लिए तो yeah, I'm dude. always happy, dude. Yeah, She also landed the man of her dreams. but yeah, so Dhadak 2 का But you said it was a very heavy film. Oh, very heavy, dude. Very heavy. It was so heavy. मतलब क्यों so ऐसा लग रहा, मतलब मूवी देख के ऐसा लग रहा है that you see a montage of
कि क्या Atrocities. atrocities towards Oh like yeah, a yeah, caste. yeah, correct. I've heard that. ठीक That's है. a heavy, in a way. हाँ वही बोल रहा हूँ, it's Yeah. very heavy. Like Yeah, yeah. सीन दर सीन में आपको बताया जा रहा है कि One तो ऐसा भी होता है, wasn't ऐसा. heavy almost at all. Like हाँ, that's what I'm in saying that कि regard. ये थोड़ा वो है. Also I was left a little disappointed with the ending. A little क्या मतलब, I think it deserved a very good ending. Not even a happy ending. Yeah, they've given a happy ending to the film. Oh, they have given a happy ending. Yeah, dude. So then why that's are a you good thing. pissed? No, because the trajectory of the film हाँ. does not live up, like does not lead up to a happy Okay, ending. we haven't seen it, so we can't say. ठीक But है. it feels like But, the kind of movie that would. So you wanted it to be a sad ending. Yeah, Why? because So, okay, so let me give you this thing. The example he gave me before we started rolling was Yeah. कि तेरा favorite खाना क्या है? Like mutton biryani. It's like आपको मैं घर पे बुलाऊं, अफगानिस्तान से चावल मंगाऊं और एक अच्छे से अच्छा मटन बना के सब कुछ रेडी करके एकदम सजा वजा के आपको जैसे ही प्लेट देने जाऊं कोई उस पे मूड दे. तो मैं सोचा कि शायद ऐसा होगा कि it was leading you up to believe that it's going to be a happy fulfilling ending and then in the end something no, shocking happens. Quite literally the opposite. It was leading up to Families have like apologize. Families apologize. Bhai, and No, they, now I'm curious. Should we spoil the movie? Yeah, of course. भाई Spoilers, guys. Okay. ठीक है. तो अब भाई पिक्चर में क्या हो रहा है ना कि Also, we must mention. So, the movie just released today when we are recording. हाँ, when we are recording. Yeah, so we should also specify the time code where you can go in the timeline if you हाँ. want to avoid spoilers for this film. Yes. But time Because it code just हम released. डालते कहाँ है यार? इसमें डाल देंगे. इसमें डाल देंगे. इसमें डाल देंगे. अब बात कर लेना कुछ काम थोड़ा यार. But what should I? Now I'm curious. Like should I kill the curiosity by watching the movie or should I? No, you can tell us. मतलब अच्छा ठीक है बता. the thing is कि मैं पहले तो एंडिंग क्या बता ही देता रहेगा? हूँ. क्या ही रहेगा? मैं आपको नहीं, ना पहले ये इसने बोला हैप्पी एंडिंग है तो मैं क्यूरियस हो गया. भाई you So, you'd is be like कि this- ना ही होती तो बेहतर था. Because the entire film leads up to a very heartbreaking ending. Okay. Like आप देखो ना, मतलब they have shown scenes like कि तूने अगर हमारी पार्टी में कदम रखा है तो हमने तुझे मार के तुम्हारे ऊपर लिटरली मूत दिया है. ठीक है, दे लिटरली पी ऑन सिद्धांत चतुर्वेदी's correct. कैरेक्टर. Yeah, yeah. ठीक है, ही इज वॉकिंग, तू मेरी सीट पे बैठ गया तो उसने तुम्हारे मुंह पे कॉलेज में कीचड़ फेंक दिया है. तुम्हारे डैड को तुम्हारे डैड को, क्योंकि वो लो कास्ट से हैं, वो एक ऑफ बीट करियर पाता है उनका, तो उनको पूरे कॉलेज में नंगा कर दिया है. ठीक है, देयर इज दिस वन गाय हु कमिट because of the Bullying. discrimination. ठीक है, एंड फेलोशिप कैंसिल होना, जो रोहित वेमुला वाला Which is inspired by, ट्रैक है. आई विल कम टू दैट एज वेल. ठीक है, तो लाइक इट्स एट्रोसिटीज आफ्टर एट्रोसिटीज. Right, ठीक है, right. ठीक है. तो अब ऐसे टुवर्ड्स द एंड बीच में एक ना रनिंग ट्रैक है ऑफ अ साइड कैरेक्टर प्लेड बाय सौरभ सचदेवा, जो ऑनर किलिंग्स करता है जस्ट ऐसे ही. But he's a serial killer. ही इज अ सीरियल No, किलर. the वो अकेले ही करता है. People hire people People to do hire him. honor killings. मतलब और वो एंड में दिखाया कि वो पैसे भी नहीं लेता. उसका वही है, थॉट इज कि मैं सही कर मैं रहा हूँ. सफाई कर रहा हूँ समाज की. ठीक है, एंड दैट इज अ वेरी मेनिसिंग थॉट इन योर. आप सोचो ना भाई, एक बंदा आपको कह रहा है कि मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा है ऐसा, मैं तो सफाई ही कर रहा हूँ समाज की, इसके लिए पैसा क्या लेना. ठीक है, तो वो एक मेनिसिंग कैरेक्टर दिखाया जो बैकग्राउंड में बस लोगों को मार रहा है. तो दे इवेंचुअली लाइक तृप्ति डिमरी's family hires him This guy, yeah. to kill him. And this is like the last event that is happening. Okay. They've beaten him. They've not let him study properly. They've not let him sit on a seat. And if he And tried now- to do that, वो उसके ऊपर कीचड़ फेंक रहे हैं, उसके बाप को नंगा कर रहे हैं, उसके ऊपर मूत रहे हैं लिटरली, क्योंकि वो उस पार्टी में आ गया एंड ही थॉट कि वो आ सकता है. इस लेवल तक पहुंच चुका है. अब वो उसको मारना जा रहे हैं बिकॉज दिस इज द पीक. वो उसको मारने के लिए इस बंदे को हायर करते हैं. किसी तरीके से सिद्धांत बच जाता है और ये मर जाता है. एंड वो देख लेता है कि इसने मेरे को मारने के लिए इस बंदे को हायर किया था. ये क्रिसेंडो बिल्ड हो रहा है अभी तक पूरी पिक्चर में. तो अब देयर इज दिस चेज ऑन द बाइक कि भाई वो आगे जा रहा है, वो पीछे उसको पकड़ने जा रहा है. कौन? चतुर्वेदी आगे जा रहा है? कि चतुर्वेदी पीछे जा रहा है ना उसको भाग रहा है. पकड़ने के सचदेवा लिए. के पीछे जा रहा है. किसके पीछे जा रहा है? तृप्ति डिमरी की फैमिली, तृप्ति डिमरी के जिसने- भाई के the पीछे. one who ordered the Yeah, murder. the one who अच्छा. ordered, yes. Okay, okay, ठीक है. got it. तो अब दोस्त ने उसको देख लिया है, वो दोनों बाइक पे जा रहे हैं, वो अपने घर की तरफ भाग रहा है और चतुर्वेदी उसको चेज कर रहा है. वो घर पहुंचता है और वो घर पे उसको मारने लग जाता है. उसकी पूरी फैमिली बाहर आ जाती है. ठीक है, एंड तृप्ति लाइक क्या हो गया क्या हो गया क्या. हमने एक तो इतनी नॉनचलांट कैसे है तू. हाँ. पूरी पिक्चर में
तेरे बॉयफ्रेंड के साथ इतना गुलू हो गया she didn't say है, ठीक anything? है भाई, उसको पता ही नहीं है पूरी पिक्चर में, क्या मुद्दे थे उसके बॉयफ्रेंड को, पता ही नहीं उसको? उसको पता ही नहीं है ना, उसका बॉयफ्रेंड उसको बताता है ना उसके घर वाले, वो उससे पूछ रही है क्या हुआ, बट वो उसको तब भी कुछ नहीं बताता. तो ये 2-3 चीजें हैं जो मुझे अजीब लगी. बट एनीवे, मैं मोटी मोटी पिक्चर के बारे में अगर बात करूं तो Was उन्होंने, she not at the party? शी वॉज एट द पार्टी, बट उसको अलग ले जाके मारते हैं. अच्छा, ये Oh. now I remember which this movie is a remake of a Malayalam film called Periyamal Parumal. Yes, this. जिसमें हाँ यही सीन होता है. हाँ, ठीक है, तो वो उसको, अब एंड क्या है इसका कि अब ये सारा ग्रिसेंडो बिल्ड हो गया, वो उसको मार रहा है वगैरह वगैरह, एंड देन सिद्धांत चतुर्वेदी एज दिस मोनोलॉग आफ्टर द एंटायर फैमिली कम्स आउट, पूरा मोहल्ला बाहर आ जाता है कि ये इतने रिस्पेक्टेड खानदान को कौन मार रहा है, एंड देन ही नरेट्स कि मेरे साथ तुम लोगों ने क्या क्या किया. वो अपना नरेशन खत्म करता है और तृप्ति डिमरी सो फ्रस्ट्रेटेड कि मुझे पूरा पता ही नहीं था अभी तक. शी हैज अ गुड 20 सेकेंड शाउट स्क्रीम. she just looking dead in the camera, like not, she's not breaking the fourth wall obviously, but she's looking directly at the family and she's like, ah, he's just shouting, and she shouts for 20 seconds. A straight shout, or like she's saying something while shouting? No, straight shout, ah, for 20 seconds. वो मूर्ति है, सिद्धांत चतुर्वेदी को गले लगाती है और यहाँ बंद हो जाता है स्क्रीन. That's it. That's the end of the. That's the end of the film. ठीक है, स्क्रीन ब्लैक हो गया. Closure क्या हुआ? स्क्रीन ब्लैक हो गया, फिर अचानक से पीछे आवाज आती है, एग्जाम में सिर्फ 15 मिनट बचे हैं. कैमरा खुलता है, सिद्धांत चतुर्वेदी उस सीट पे, जिस सीट पे उसको बैठने के लिए मना किया था ना, उस सीट पे बैठ के एग्जाम दे रहा है, और उसका भाई ही उसको पेन पास कर रहा है कि अरे तेरा पेन खत्म हो गया ना, तू इस पेन से लिख ले. आई एम लाइक, तू 2 घंटे तक उसको जान से मार रहा था, एंड ऑल इट टुक यू वॉज अ 4-minute मोनोलॉग कि तेरे को, मतलब तूने जो जो चीजें करी, उस बंदे ने बस तेरे को वो चीजें गिनवा दी तेरी फैमिली के आगे कि तूने ये किया, एंड नाउ यू आर अ चेंज्ड मैन. Dude, you have to show some comeuppance, no? You can't just. कोई Nothing. incentive, Nothing. भाई I waited, I was like, ये शायद पेन फट जाए, इसकी पेन की इंक में जहर हो, और वो चलाने के लिए जीप पे लगाया और वो मर जाए, कुछ मतलब बेसिकली. Is it supposed to be a dream sequence? I know. No. Okay. अब एक सेकेंड, अब अगर नहीं, मैं तो रुका था क्रेडिट्स तक, बट देन अगेन मुझे यहाँ आना था, तो आई थिंक मैं पोस्ट क्रेडिट सीन के लिए रुका. इफ देयर इज अ पोस्ट क्रेडिट सीन. But yeah, that's a pretty strange Yeah. call. Yeah. It almost seems Yeah. like a studio note के हाँ. ऐसे नहीं दिखा सकते. तो मतलब अचानक से you I feel like they cut a part of the ending. भाई, बट अगर आपने इतना कुछ दिखा दिया है, हाँ. तो अब क्या बाकी है? Like you No, literally because have see, a the thing is, what they must have written must have not been as impactful. Ki, what do you? No, but what do he you say? described is she turns around and takes his hand and screen cuts to black. Oh, that It's a could have great been. That's not a ending. great end. Of course, but it makes sense that she rebelled against the family when she came to know Oh. उसके साथ ये कि अब और अब मैं choose कर रही हूँ consciously उसके साथ जाना. Correct. It's a satisfying ending. बट वो satisfying ending भी जो स्क्रीन के बाद आती है ना, it doesn't look Sure, satisfying. No, so what I'm saying is, to me, what it sounds like is there was more to that scene that they cut out. आई थिंक उनको ये लग रहा था कि जो स्क्रीम है वो इतना इम्पैक्टफुल होगा. Maybe. Yeah. भाई, people left after the interval. क्या वो रोंदू फिल्म है क्या? भाई मैं आपको It's कहता a हूँ, hard- the way he's saying. it's atrocities after atrocities. Okay, got it, Like yeah, there fair are hard hitting dialogues. You keep thinking. And अब जैसे मैं रोहित वेमुला की बात कर रहा था, उसके कॉलेज में एक बंदा दिखाया है जो दलित कम्युनिटी से आता है, एंड ही इज फाइटिंग फॉर द राइट्स, राइट. एंड उसका ट्रैक रोहित वेमुला के ट्रैक से इंस्पायर्ड है. ठीक है, तो लाइक उसका फेलोशिप कैंसिल होता है, एंड देन ही वो धरने पे बैठता है, उसका कुछ नहीं होता. देन वी इवेंचुअली फाइंड आउट, तो वो उसके रूम में चेक करने जाता है, तो दे फाइंड आउट दैट ही इज टेकन हिज ओन लाइफ, जस्ट लाइक रोहित वेमुला से डायरेक्टली इंस्पायर्ड है. ठीक है, ये पूरा ट्रैक ऐसा मुझे तो लगा एटलीस्ट. एंड वैसे ही ब्लू से दीवार पे मैसेज, जैसे रोहित वेमुला का लेटर बहुत फेमस हुआ था, राइट. तो वो दीवार पे लिखा हुआ है देयर इज दिस वन कविता. मुझे वो ट्रैक जिस तरीके से उसको ट्रीट किया, उस बंदे ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है. बट इट्स जस्ट एट्रोसिटीज आफ्टर. एंड वो एक डायलॉग बहुत सही है जिसमें सिद्धांत कहता है कि जिनके साथ नहीं हो रहा होता ना विधि, उनको लगता है कि ये चीज नहीं हो रही. वेरी हार्ड हिटिंग डायलॉग, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. सीन आफ्टर सीन यू जस्ट फील अनकंफर्टेबल इन योर गट, यू फील बैड. And that's kind of why there's like some kind of a boycott campaign against this.
There वो is. तो यार any because film- of this they're like "Oh, ऐसा तो होता ही नहीं है." So होगा but ना that actually means that they are successful Yeah. in what they are trying to show. Yeah. And that's what I was actually trying to say the entire film, to stay in the positive ki bro, very important to make a movie like Correct, this. correct. But then end I don't remember was, if the original Malayalam film has this ending. I have to check. But yeah, I get what you're saying. तो now. आई वाज Yeah. लाइक एक मोनोलॉग से तेरा पूरा प्रवृत्ति ही ऐसा चेंज हो गया कि उसका पेन खत्म हो गया, तो तू अपना पेन भाई तू ले ले भाई, तो तेरा एग्जाम लिखना बड़ा जरूरी. So all in all then Dhadak 2, do you recommend that people go watch it, or is it यार आई थिंक is it not for the faint hearted? so it actually is not for the faint hearted, Okay, very fair enough, honestly. fair Bro, but all this is happening in But it in, yeah, in real but life. yeah, exactly. It's true. The It's but true. to this sentence is कि this is the reality of your society. Like if you are not seeing it around you in your tier 1 Doesn't mean it's not Gurgaon happening. offices, Yeah. it does not mean that it is Does not not happening. happening, yeah. हो सकता है किसी tier 2 city, tier 3 city में ये चीज हो रही हो, क्योंकि उसमें Tier 1 में भी हो रही है, tier 1 में भी हो रही होगी, छुपी-छुपी छुपी छुपी हो रही होगी, right? तो I think ऐसी फिल्म ऐसे टॉपिक पे बनना, and dude the fact that they've used Rohit Vemula's entire track to how it was, Right. like as closely as they could have followed could it. have, yeah, That's also something. In that case, it's a big thing that Dharma has produced it and Yeah. Siddhant Chaturvedi. Siddhant is in Chaturvedi has Yeah, done yeah, it, yeah. Oh. and he's done a fabulous I job. heard he's a good dude. job, but He's done a very good job. overuse of bronzer or no? Oh, मतलब यार I think उस पे तो मैं कौन ही होता हूँ कमेंट करने. All right, that's Like, it. देखो मैसेज दे रहे हैं Yeah. ना, तो अभी Yeah. थोड़ा हाँ अभी यार मतलब थोड़ा अगेन डार्क फेस. मैं जैसे पिछले एपिसोड में भी मैं कीर्ति वगैरह था कि आई एम द लीस्ट क्रिटिकल पर्सन आउट ऑफ व्हेन इट कम्स टू ऑल दीज थिंग्स. इफ आई एम रेडी टू बिलीव इन द वर्ल्ड दैट यू आर ट्राइंग टू बिल्ड, आई एम ऑल इन. आई विल इग्नोर 10 थिंग्स दैट कैन बी इग्नोर्ड. Right. अब जैसे सीन इस मूवी में एक पॉइंट ये है कि ये सिद्धांत और तृप्ति मिलते कैसे. वो तृप्ति के एक फंक्शन में बाहर ढोल बजा रहा है एंड तृप्ति को वो देख के अच्छा लगता है, लाइक नंबर दो ना अपना. नहीं होता ऐसे. Yeah. नहीं होता ऐसे. But I am ready to ignore that. Correct, It's fine. yeah. It's okay. How weird it would have been if you've gone for this movie and Antariksh was sitting next to you. Alone. Watching Dhadak 2 alone. That is sad. Okay, moving on from Dhadak 2. Guys, I just... Which you will not be able to for a very long time because it's a very gut-wrenching film. Please continue. Sorry. Sure. I must say that I just realized that we talked about you guys meeting and all on Fantastic Four, but then we didn't talk about what the movie was like. कैसे लगी तुम लोग को? Fun. To check out the review, go to my channel and watch the third episode of According to Abbas, where I have reviewed the film in depth. Okay, 25 but minute का review किया मैंने, but your sorry, real फूक thoughts, दिया मैंने. but your real thoughts you will share now. Correct. What are your real thoughts? Fun, I had fun. It's a इतना ही रिव्यू बनता है उस फिल्म का. बस that's it. It's a fun watch. That's बस. it. बस खत्म. तूने That's it. धड़क 2 को 3 घंटे खींच लिया इसका एक्सप्लेनेशन. Because धड़क सन 2 और में- सरदार चौथे घंटे में चल रहा था. धड़क 2 में context है यार बहुत. धड़क 2 में कॉन्टेक्स्ट है, रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट है, कंटेंट है पिक्चर में. फैंटास्टिक 4 इज चिलिन. एवरीबॉडी इज चिलिन. Just a good watch. या उनका एक बहुत बेसिक सा मिशन है और उस बहुत बेसिक से मिशन को कंप्लीट करने के लिए बहुत बेसिक सा सोल्यूशन है. एक बड़ा सा आदमी प्लेनेट खाता है, वो अर्थ खाने आ रहा है. फैंटास्टिक 4 को बचाने का है. हाँ और वो बचा लेते हैं. इनविजिबल And- वुमन को बच्चा होने वाला है, बच्चा चाहिए उसको. And Silver Surfer there. Lady And Silver Silver Surfer is there. She And has she's a trauma lady. and Yes. she has trauma. Yeah. Yeah. थेरेपी नहीं जा पाई वो. All right, cool. Fair Can I enough. do this once? Yes. Let's move on. Oh, nice. Nice. आपको पता है ना कहाँ से लाया वो ये? कहाँ से लाया है? थाईलैंड से. थाईलैंड से लाया निकाला। वो. थाईलैंड के एक पार्लर से कहीं से निकाल ठीक है, के. इतने दिन से पड़ा हुआ है. चलेगा. Yeah, it's called the Peep Show. No, the Ping We're Pong not Show. making it any The better. Ping Pong Show. The Ping Pong. Let's move on. The Ping Pong Show. All right. So I saw a series. I don't know if either of you watched I it. have watched it. Yes. Mandala. Acha, by the way, guys, I have quit my job. That's why I have been able to. Correct. Oh, great time. Just when I'm about to introduce something, let's. अरे मैं बता रहा था कि दिल भी लाइक बंचो कितना वेला है देख पा रहा है कि मैं ये, क्यों देख पा रहा हूँ ये सब कुछ चीजें. देख लिया. हाँ. हाँ, correct. You have watched everything. Everything that is. But you've been unemployed for one day and you watched everything But the last mentally week. he's Huh? been But unemployed I- for a while. वीकेंड पे देखा guys. Correct, that's true. Mandala Murders, for anyone who hasn't seen. Yeah, I haven't seen. you haven't What's seen. it about? It's a show about a series of murders What are you saying? that start happening Because in of mandalas? because of a certain cult
Okay. Okay, there's some kind of black magic involved. It's also like investigation by cops, the cop kind of show it is. And there's certain conspiracy theories about why this is happening, who's doing it, is it a cult behind it, is there actual magic, black magic, or is it just someone like scamming their or hoaxing their way through. Yeah. So a lot of these questions, it starts off, I feel, very strong, very well, and then by the time it ends, it is fizzled out. The stories has become very convoluted. They were going down a certain path. I feel like they deviated from the path I too feel much. like this for almost every Netflix show. That's fair, Yeah. dude. So for sure, dude, when the 4th episode was happening of the show, I was like, oh, okay. How many are there total? There are 8. Okay. When the 4th episode was happening, oh, okay. I was like, if this is the 4th episode, if this is not the final episode of the show, I know the next 4 episodes, they're going to drag it out, and I was exactly right. I was 100% right. Okay, so it starts off very well. Say if you agree with me. It starts off with, dude, a lot of... So there's the sci-fi element also. Okay. Oh to yeah, this- dude, that was very crazy. Yeah. So when they introduce the sci-fi element to the black magic, okay, there's supposedly a device in which if you give dakshina, okay, which is you have to sacrifice a part of your body. Usually is the thumb of the Okay. person who is asking for the blessing, Okay. the vardhan. Okay. So you sacrifice That your is the story of Eklavya, right? no, yeah, that's yeah, yeah. you sacrifice something to Yeah, get this something. Yeah, correct. and thumb. Yeah, correct. So you sacrifice the thumb, Yeah. and then you ask for your vardhan. Your vardhan can be like, my daughter is extremely ill. Please make sure nothing happens to her. Okay, and okay, fine. It'll somehow happen that Yeah. nothing happens to the daughter. And there's actually magic, like proper magical, दिखाया, like हाँ. Vardhan. So like for instance, in the show there is one part where one woman is like, कि मेरे दो जो गुंडे बेटे हैं, हाँ. they have been kidnapped and they've been taken away. Please protect them. Okay, and then madhumakhiyan come out of nowhere and protect them. But it's shown like, okay, I guess this is happening. It's crazy. So that's the world they're establishing. So establish it really well. So the way it starts is this guy is having a bath. Was it? Yeah, this guy is having a bath in the ghats of Varanasi or whatever, right? And you see next to him there's something floating. Okay, and your eye goes there. His eye goes there, and it is a face of a person with the limbs of that person attached to just the face. What the fuck? Okay, so it starts like that. You're like, fuck this shit. Going that way, that's awesome. Bro, within the first That's 5 minutes, awesome. as you rightly said, I was like, whoa! Yeah, I was like, dude, that is For an if Indian show to do yeah, that. exactly. Show that as a visual. Yeah. It's crazy. Crazy. ठीक है. And dude, they've not just shown like, oh, stuck together Fevicol. No, they've like been sewn together. Proper ऐसा. So like someone has gone Yeah, surgically yeah, yeah. attached the face to Yeah, the legs from coming down from there, the hands from here. Crazy. Okay? And then slowly you start to unravel. Then Vani Kapoor's character gets involved. Okay? Then at some point it goes the Tobey Maguire Spider-Man route or the Spider-Man route where everything is related to these guys only. So the people we are following now, this person is related to this, how this person is related to this, how everything is in the family, and that becomes very बॉलीवुड चल अब अब हो गया है हाँ. मतलब अगर तुम एक्चुअल में एक ट्रेल फॉलो कर रहे Yeah, होते it ना तो was समझ में आता very है. well done. बहुत मतलब इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट dumped down to like Yeah. the lowest level that they could have. Basically like अगर मोटा प्लॉट बताने जाए तो there is it starts बहुत off with बहुत one मुश्किल murder. है वैसे Yeah, it मोटा starts off प्लॉट one बताना. with one 8 murder. घंटे का show. Correct. Yeah. Starts off with one murder and then a cop and a team is Is called it in. based off of something like a book or something? Or is I'm it not original sure at concept? all. Okay. I don't think so. Okay. Because and all of them are crediting Uday Chopra for sanctioning it. Oh. Because they like I think the creator of the show has posted on Instagram this man right here deserves all the credit and all the love that we are getting for Mandla Murders because he believed in the concept and all that. Dude, I didn't know YRF was doing streaming shows. they're doing a couple. Okay. Also, I must say, the show has its problems. Some strong suits. The first 4 episodes are kind of strong, Yeah. and the latter 4 for me was like rather weak. Okay. There's a certain love angle in the show which is weird to explore. Not required. Yeah, not required. It Not just made required, it gave you yeah. an ick feeling. Yeah. Because the it's so the one sister. So there's a cop, okay, who's
currently on like some kind of vacation or something from his police department. So he's not in Delhi, but he's in this little village where all this shit is happening. Okay, his fiance named Kavita is in a coma. Okay, because a few years back there was an attack on she them, got attacked, and she yeah. got hit in the head by like a pipe or something, and she's in a coma since. Now this the fiance, the coma fiance, her sister is a politician in this village, okay, in this little district or something, and she has had a crush on this guy this entire time. Okay, now so then they have like a weird like fucking awkward moment, no? Yeah. Okay, sexually charged moment, And they give then into it also. They give into it, whatever. Yeah. And then later, spoiler alert, turns out she's one of. Are you gonna watch this show? I don't think so. Okay, turns out she's one of the main villains. So then it makes her actions make no sense. Why is she giving in to her fucking desires and all for this shit? Doesn't make any sense. And then she tries to justify it by saying कि देखो तुम समझ नहीं समझोगे. हाँ I'm कि like, मेरे dude, लिए that's your कितना explanation, मुश्किल था. तुम नहीं समझोगे. हाँ, क्योंकि हम भी नहीं समझ पा रहे Yeah, हैं हम नहीं समझ पा रहे. तुम्हें भी समझ नहीं आ रहा. Yeah, that's great. ये तो मुझे अच्छा लगता है है. राइटर को जहाँ समझ नहीं आ रहा होता ना तुम कि नहीं तो समझोगे. लाइक कि मैं नहीं ये समझ राज पा भी रहा उसी की तरह उसी के और साथ. अगर मैं नहीं समझ पा रहा तो ये प्लेब्स कहाँ समझ पाएंगे. ये राज भी Like, उसी के साथ तुम निकल नहीं रहा है. समझ. Yeah. सर कंप्लीट है स्टोरी. There's also another अब वो part. उसको पेन दे देगा लिखने के लिए. So imagine how it started. Okay, I explained Yeah, that to you. yeah. Great. Imagine that as like one of the first Yeah, scenes. yeah. Great beginning, right? Then there is a part where there are a few other moments wherever this horror element is involved. No, that those moments are kind of well done. Okay, Yeah. so like I must say, every time someone asks for a vardhan, there are multiple moments of this. Ask for a vardhan and they show the cut off thumb. It every time makes you हाँ कि हाँ. because that is a very human reaction, Yeah, right? So that I love that feeling. एक That was वो भी awesome. मुझे इसका पार्ट बहुत अच्छा लगा था वेयर जब एंड में सारा कनेक्ट द डॉट्स होता है तो दे से दिस वन लाइन कि लोगों को लगेगा कि उनके वरदान पूरे हो रहे हैं बट एक्चुअल में हमें पता लग रहा है कि हम किस किस को यूज कर सकते हैं. So they don't know the price that they are paying for That's the true, Vardhan. that's true. Because then it has a double. Yeah, because there's a, उसके like, added repercussions layers. है. Repercussions, Like yeah. जो जिन लोगों ने वरदान मांगा है वो लोग ही मर रहे हैं. Yeah, yeah. बाद में आपको पता चल रहा है. Yeah. ठीक है, तो सबके अंगूठे कटे हुए हैं. तो दे आर लाइक कि तो द पीपल हु आर प्लानिंग इट दे आर लाइक कि हमें बस जो हमारा एक्चुअल मोटिव है ये वरदान इनको देना उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. बट अननोइंगली दे आर ओनली गिविंग अस आर टारगेट्स. हमें मतलब अगर आप वरदान मांगने आ गए तो मुझे आपके लिए आपको ढूंढने जाना नहीं पड़ा ना. आप ही मेरे पास आ गए वरदान के चलते. Also, I must say one more plot point which I did not mention earlier is all this cult, okay, is the mandal. They call it the mandal. Okay, the mandal is doing all of this to revive or to reincarnate their big entity. To create a god. To create- They have a god and they want Yeah. to bring that god into one human form. Yeah, the god's name is Yast. Okay. Yast. So they want to get Yast back. They were basically like कि येसु नहीं बोल सकते हम तो यस्त बोल Yast. लेते. Hey, Yast. तो उसके अगर आपको यस्ती, यस्ती, एक लाइन में यस्ती. बोलो तो बेसिकली इस कल्ट को अपना भगवान जिंदा करना है, बनाना है. एंड उसके लिए दे हैव दिस बुक जो अपेरेंटली इनके भगवान ने लिखी है. एंड उसमें लिखा है कि मुझे जीवित करने के लिए या मुझे यहाँ लाने के ये लिए चीजें आपको इस इंसान का टॉर्सो Black चाहिए, magic. इस इंसान का The hair आपको of the हाथ lizard ऐसा चाहिए. होता है. तो ये जब असेंबल हो जाएंगे तो मैं जिंदा हो जाऊंगा. With your Yeah. powers come And then turns out, then you go back in time, turns out, so then the device, that the thumb taking device, which then analyzes. thumb-taking device. Yeah, they analyzes the Let's energies. call it thumbs up. Yeah. Who made Sacrifice. the device? That's what Vani Kapoor's grandmother was a scientist who got inspired by this also, and then she like somehow And formulated. guess who Vani Kapoor's grandmother is? Vani actress? Kapoor. Yeah. Oh. Oh, he spoiled it. Sorry. It's Vani what I Kapoor. asking. And it's the most Bollywood way to introduce it कि मुझे जो सपने में दिखती थी वो मैं नहीं, मेरी वो तो दादी मेरी थी. Correct. दादी थी. Oh, but by the way, also about the Dadi, okay? They go back in time and they're showing the foundations of the mandal and what happened, whatever, 50 years back or whatever, 52 years back or whatever, okay? And there's a point where Not Rukmini... 52, 72. Yeah, whatever. 1950s and 2025. Correct. These are the तो वही- parameters. हाँ, ठीक है. So there's a point where Shriya Pilgaonkar's character named Rukmini stabs Vani Kapoor's grandmother, played by Rani Kapoor also. Okay, so Rukmini stabs Nandini. Okay, and so he stabs her, full stabs. Okay,
and Nandini falls down because immediately you get stabbed in the fucking neck. You're dead, dude. There is no coming back. You'll gurgle some blood. There's no walking around. Okay, she dies. She's dead. Okay, Rukmini then turns around. Shiv character. There's also a riot. People trying to break into wherever they are. Okay, so trying to like, okay, like now placate those guys. Okay, guys, relax. We'll hold our grounds. Okay, she turns around. This woman has gotten back up. Okay, to set fire to Yast's supposed like avatar body or whatever. Yeah. Okay, dude, that was so nonsensical. The way it was shown, because she was clearly dead. हाँ And that coming back up was also took me out of it. वो तो आप भाई आपका तो टुक मी आउट ऑफ इट लास्ट एपिसोड तक चला गया मेरा तो नहीं, मेरा तो चौथे बोल तो रहा हूँ, पांचवे चौथे लाइक कि भाई after अब ये बॉलीवुड हो रहा है बहुत। एंड अगेन आई हेट टू यूज बॉलीवुड एज लाइक कि ओ खराब कर दिया Yeah, ठीक है बिकॉज बट because Sana Sadar इसको अच्छी लगी. but then I think with 2020 like with 2025 I think there are some tropes that we should let go of at this point. मेरी दादी भी मेरे जैसी ही दिख रही है, सपने में मुझे दादी दिख रही है, सब कुछ जो है वो मेरी फैमिली में ही हो रहा है, मुझे मेरी ही फैमिली में सारे राज पता चल जाएंगे. वो सब चीजें I think we should move on from those now. But and make Son of Sardar 3. Have they? Of course, they're going to make it. Have they left it open for a season 2? They always try to, but They have. I forgot what was the ending. Ending में like one of the people from the cult is alive and is jailed. ठीक है, and the last scene is that someone, a shadow, walks up to the cell and this person smiles and she looks at her and she smiles. Dude, you know what I was expecting the end to be? I was like the 7th episode started with it. I was like, I predicted this, but I was wrong. But I predicted the final will be so at the end they won't be able to revive Yast. Which happens. But which are not they're not able to do. But I thought the end would be someone does finally and doing it, and they'll be opening his eyes. And that is just फिर okay, उसके the बाद cliche लेकिन ending. गेम ऑफ थ्रोन्स का सीजन 8 बना के खराब भी तो करते हैं ना. Yeah, correct. But वो भी नहीं हुआ. So I was like, dude, like Point क्या था? Point क्या था? See, the thing is, if you don't, the entity you're trying to revive, you have to show me why people are scared. No, you have to show me his full power so that I can be scared of that power. They never come to that. I was thinking, okay, at least one time he'll come alive. and or then some someone part will of try him. to stop him. Yeah, something like that. कुछ तो होना या चाहिए. ऐसा होता ना कि मतलब वो रिवाइव हो जाता चौथे पांचवें एपिसोड में. हाँ. एंड उनको उसी की Stranger Things बोलते हैं उसको. उसी की डेथ कैसे होनी है उसका राज भी उन्हें उसी की किताब में मिल जाता. एंड देन आगे के 2-3 एपिसोड में वो चीज करके उसको खत्म करके दे लाइक गेट द वर्ल्ड टू नॉर्मल. तो ये ऐसा कुछ ट्रैक एक्स्ट्रा होता तो सही लगता. बट चलो at least it's an attempt in the right direction. I would like to say कि they tried to do something new. We are doing us Sundaris are planning to do a live episode of Pop Conversation. And वो कैसे कैसे आगे जाएगा वो अब्बास आपको सभ्य भाषा में और आसान शब्दों में बताएगा. Again, if you didn't get it, Pop Conversation live. Yeah, Pop Conversation live. We're planning to do it in September. The exact dates will be out very soon. Dates क्या? Date singular date. एक ही episode live कर रहे very soon. And we're doing it in Mumbai. So if you are someone, and we don't mean live stream. Yeah, we mean in live person. in person with a live Physically audience. वहाँ पर होंगे. Yeah, in on ऐसा stage. रणवीर सिंह टाइप कपड़ों में. Yeah. And so if you're in Mumbai and you listen to this show, please keep a lookout. Or if you want to travel from other cities also, you can. But, Yeah, please follow us But- on Instagram. You will yeah. find out any updates on there, or keep checking on Book My Show for Yes. Pop Conversation Live. You will And see that. if you are someone who's taken the membership of this particular YouTube channel, there will be special perks for you for the live show as well. We will reveal all of that in the coming weeks. Yes. So please You keep get to listening. shave Snehil's head. Oh, thank God he said head. Or something else. Or something else. बट मैं पहले एक जो पर्क हमने डिसाइड कर लिया था वो बता देता हूँ. वो है कि अगर आप मेंबर हो और अगर आप इवेंट अटेंड करना चाहते हो तो आप फ्री में अटेंड कर सकते हो. एंड जो मेंबर नहीं है उनको कैसे अटेंड करना है
वो अपन बता देंगे। वो टिकट से अटेंड करना है। हाँ, और वो टिकट से attend करेंगे। शो से अटेंड किया तुम लोगों ने? और शोज अटेंड कैसे करते हैं भाई, हमें पता ही नहीं। बट दैट्स फॉर श्योर, अगर आप मेंबर हो, यू बिन अ मेंबर ऑफ द चैनल, तो आप फ्री में अटेंड कर सकते हो। वो शो एग्जैक्टली क्या है, अभी हम लोग उसको स्ट्रक्चर वाइज ब्रेक डाउन कर रहे हैं, कैसे कैसे उसको हम कैरी आउट करेंगे। तो डिटेल्स जो है वो हम धीरे धीरे आगे आने वाले महीने में बताते रहेंगे आपको, आगे आगे आने वाले एपिसोड्स में। We have a lot of cool things planned. So A lot of cool things planned actually. बहुत सारा crowd interaction, crowd involvement in the episode. Shahrukh is Khan definitely not gonna be there. But who- Urvashi who- Rotela, who by the way has won his first national award today for Jawan Best Actor. because of I can't all the believe things that he didn't win for Swades or whatever. Oh dude, Bro, guys, what is Swades in front of Jawan? Are Guys. you crazy? the greatest actor of all time on a national That's true. It's a Oh big yeah, day. Vikrant. day for you. Vikrant Massey, Antariksh. my Captain America. Has won the Has become National Captain Award India. of Captain India. India. I think इस पॉडकास्ट पे अब दो लोगों का आना बहुत जरूरी है। सारे एक है मल्होत्रा विक्रांत मसे और दूसरा है टार्जन द वंडरकार। The Tarzan Wonderkar as a person. As a person has to come here. So Ajay Devgan has to But come. said basically. No, Ajay Devgan has to come. Ajay Devgan also. Is Tarzan the Wonder Car? He's the Tarzan. Yeah, yes, yeah, dude. He's He's the not. But See, yeah. that movie was directed by Abbas Mastan, and I'm already here, so Mastan. We need But you're Mastan. So guys, again सब कुछ जो है समराइज करते हुए हम लोग पॉप कॉन्वर्सेशन का एक लाइव इवेंट करने वाले हैं। हम लोग उसको स्ट्रक्चर कर रहे हैं, बहुत सारा ऑडियंस इन्वॉल्वमेंट और सब कुछ उसमें रहेगा। द मेंबर्स के लिए ये इवेंट फ्री है। सो इफ यू आर इन मुंबई, इफ यू ट्रैवलिंग, अगर आप मेंबर हो तो यू कैन अटेंड द If you're इवेंट फॉर traveling, फ्री। you're not paying your travel expense. भाई बहुत लंबा प्लग हो गया, इतना लंबा प्लग Okay, कोई नहीं fine. करने The वाला है। episode is ठीक है। done. क्या कर रहे हो? Very Yes. quickly, check out my channel. It's by the name of Abbas Momin. I do a podcast called According to Abbas. There, Snail. Anything you want to plug? नहीं Wanna भाई। Ask for work from. हाँ, अगर किसी के पास कोई फ्रीलांस काम हो तो मुझे जरूर बताना। मैं That- अभी जॉबलेस हूँ। And Snehal just did an amazing interview with Rajiv ठाकुर Thakur. Yes. From that guy from Kapil. Yeah, you know what I'm talking Yes, about. yeah. You know what I'm talking about. And you can find that on the Pink Villa YouTube channel. On the Pink Villa YouTube Yes, channel. yeah. So And you plug your shit. oh, please check out that filmy game show. I just did an epic, amazing, super long episode with Anas, Mohammad Anas and Pulkit Kochar. Yeah, longer Fucking than this banger, one. Yeah. banger episode. And dude, यार ये so much पुलकित love. और अनस को पॉपकॉर्न मशीन पे आने हुई बोलो ना। यार वो मैं तू बस बोल, वो आ जाएंगे। अरे तो बोल मैं तो दिया। कितना बार बोलूं आपको। ठीक है चलो, वो आ जाएंगे। Pulkit, Anas, you guys are coming on the show also. So that, and please check out Spendermender, check out Crickets, check out The Internet That's So, and Kirti and I are working on something together also. So that, So, ए success- अपना शादी वाला पॉडकास्ट रिलीज Hey! करो ना। अच्छा, हो, नहीं, वो नहीं आने वाला है। All right, bye bye guys. See you soon. Bye.